नमस्कार दोस्तों, अनन्या एकेडमी के नए टॉपिक जो कि एलटी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सारे परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। वो टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। और फिगर्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते चले आए हैं क्लास 12th से, व्हेन वी वर द स्टूडेंट इन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। एंड दिस फिगर्स ऑफ स्पीच इन हिंदी कॉल्ड अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, गहना। और स्वाभाविक सी बात है, गहना जो आभूषण होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। यू सी, महिलाएं पुरुष हमेशा सुंदर बनने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जॉन कीट्स का एक पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, राइट? तो in this context, just I want to teach you that what is the figures of speech and how is this so important, right? So you see that if you see a figures of speech, it is the departure from ordinary language to extraordinary. Departure from ordinary language to extraordinary. That is the first thing, right? Now departure from ordinary language to extraordinary, this is called figures of speech, right? This is called figures of speech. Now, so what I want to tell you is that what poet does, this is very important. What poet does, in fact, right? What poet does, you see, poet employs certain figures of speech, certain artistic devices. In other words, we can call it artistic devices. They are called artistic devices. And because of this, a poet becomes a poet. जैसा कि हिंदी में कहा गया है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. So poet uses a lot of imagination. Imagination is the crux of poem. That you also find in romantic poem, because it is all about imagination, or so many poems. तो जो चाहे हिंदी के पोएट हो, चाहे अंग्रेजी के, चाहे संस्कृत के, कोई भी पोएट सबसे महान बनता है बिकॉज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। और इसीलिए आज मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहा हूं, और इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस फिगर्स ऑफ स्पीच से हर परीक्षा में, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे जितने एग्जाम हो, हर एग्जाम में लगभग उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, पोएट क्यों इसको यूज करता है। और आप, जैसा मैंने बताया था कि व्हेन यू रीड लिटरेरी थियरी, यू फाइंड दैट Plato says that poet should be banished from an ideal society, and he gives only reason that poet tells a lie. तो स्वाभाविक सी बात है, जब पोएट एक फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करता है तो वो झूठ बोलता है. And therefore Aristotle says that no, poet does not tell a lie, because poet creates a certain artistic recreation. Now this is the word of Aristotle. This is called artistic recreation. He has written a book called Poetics, if you read Poetics, right? So that is how you know that when you define figures of speech, then P.C. Rain says that a figures of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in art, in order to produce extraordinary, in order to produce more effect, in order to produce
more effect. And this is what you find that earlier, as you know, that Aristotle, who is considered as the as the precursor of that English literary criticism, he has written a wonderful book called Poetics, where he says that this is artistic creation. So poet does not tell a lie, though he imitates, that imitates, and that's why it is said that poem is an imitation. In fact, drama is an imitation of an action. तो फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब यही होता है कि जब हम किसी बात को, किसी सामान्य बात को, इफ वी वांट टू टेल समथिंग ordinary things into extraordinary, and therefore we employ certain artistic device, तो उस जगह फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, और यह फिगर्स ऑफ स्पीच हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जो पहला फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, इसमें होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड if I say metaphor is very important. That just you should understand that figures of speech is a device which a poet uses to make it more effective, right? To make it from ordinary to extraordinary, right? So that's how a poet uses this. And therefore we have departure from ordinary language to extraordinary. This is the focal point that you all must understand, that what is that this is a focal point, that that a poet uses this artistic creation because of his his major attitude, and the major factor for him is that that poet uses this artistic expression to create certain sense of extraordinary thing, right? So the first artistic device is called metaphor, and you know that Iyer Richards says that metaphor is everywhere. Metaphor is everywhere, right? So this is what he says, that metaphor is everywhere. So this is his theory, that metaphor is everywhere. So if you want to understand what is metaphor, metaphor means it is everywhere. And what is metaphor, कालिदास को आप लोगों ने पढ़ा होगा संस्कृत में, उनको कहा जाता है मेटाफर का, मतलब कि उपमा कालिदास से, उन्होंने बहुत सुंदर उपमा का यूज किया। हिंदी में आप देखेंगे कि तुलना करना, है ना, रूपक, खासतौर से रूपक माने रूप बनाना, हिंदी में जिसको रूपक बोलते हैं, रूपक अलंकार। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में मेटाफर के पहले हम सिमिली बता देते हैं आपको, लेकिन पहले मेटाफर समझिए। तो मेटाफर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाफर होता है, इट इज द टू थिंग्स आर ट्रीटेड एज वन, two things are treated as one, and words of comparison like as, so are not used. देखिए, इसमें दो चीजों को एक जैसा मान लिया जाता है। दिस इज अ implied simile. If I say this is called implied simile. ये simile है, लेकिन इसमें as, like and so नहीं है। as, like and so नहीं है। You see, this is simile, but there is no as, like and so. So it is an implied simile. It does not, like simile states that one thing is like another or acts as another, but takes them for granted. It takes them for granted means that it makes everyone like this. It seems that two things are similar. For example, there is a very famous line, life is a dream. For example, if I say life is a dream, or if I say love is a blind, love is blind, love is blind, simply प्यार अंधा होता है, जीवन एक स्वप्न है।
तो स्वाभाविक सी बात है, प्यार अंधा होता ही है। जब हम प्यार करते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता कि कभी कभी हम अंधे हो जाते हैं। और कभी आपने देखा होगा कि समटाइम्स कपल कमिट सुसाइड, है ना, सुसाइड कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई वी बिकम ब्लाइंड, आवर सेंस डज नॉट वर्क एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट। और जीवन क्या है? जीवन एक स्वप्न है, दैट इज ट्रू। इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। दैट्स व्हाई मैकबेथ सेज दैट लाइफ इज वॉकिंग शैडो, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, life is nothing but a walking shadow. So that is metaphor. So Shakespeare has used extensively metaphor, और मेटाफर के आधार पर ही कभी कभी कहा जाता है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया और वाइस वर्सा, शेक्सपियर इज द कालिदास। तो इसमें हम दो दो चीजों की तुलना करते हैं, एंड वी डोंट यूज द वर्ड्स लाइक एज एंड सो, but what we do is that we take them for granted. We think that both are one. We compare one thing to another without using as, like and so, and this is an implied simile, right? This is an implied simile. There is no use of as, like and so. And dear friends, as I told you, that you see that there are a lot of figures of species, but metaphor is very interesting. You see, a lot of critics, they have done their work on metaphor. For example, I. Richards, he distinguishes metaphor into two parts that I'll take up later, that is called tenor and vehicle. He says that metaphor has two parts, one is called tenor and then there is called vehicle, right? That's also he says metaphor. He also says that metaphor is everywhere. As a concept, metaphor is everywhere. Why? Because according to I. Richards, metaphor is a transformation. You see, according to I. Richards, metaphor is a transformation. Metaphor is a transformation. Which means metaphor is a change. Metaphor means change. So the moment there is a sudden change, according to him, this is called metaphor. For example, the moment if there is a sudden change, then there is a metaphor, right? So according to I. Richards, metaphor is everywhere. So for example, this is what we call metaphor. So यदि आप अंग्रेजी साहित्य को पढ़ेंगे और उसके ब्यूटी को देखेंगे तो मेटाफर काफी मिलेगा, और किसी भी सिमिली को मेटाफर बनाया सकता है। तो पहला एग्जांपल है लाइफ इज अ ड्रीम, कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। दूसरा लाइन है कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। दूसरा लाइन है, इट इज वेरी फेमस लाइन, दैट कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। दूसरा लाइन है that camel is the sheep of desert, right? So this is another line that he says that camel is the sheep of desert, right? So that is another line, right? So he says that that camel is the sheep of desert. So this is his very famous line. He says that camel is the sheep of desert, right? That is another line. And then he says that that there is a very famous line that he says that you find that there is also a very interesting line. He says that camel is the sheep of desert. वो कहता है कि जो कैमल होता है that is the sheep of desert. So camel को desert का sheep कहा जाता है. So camel can not be a sheep, but यहाँ पे हम कैमल को एक शिप मान लेते हैं, राइट? we think that a camel is the ship. So that is another point, that camel is the ship of, right? Then
Now there is another line. For example, Kalidas is the Shakespeare of India. If I say Kalidas is the Shakespeare of India, that is another example that Kalidas has been compared as the Shakespeare of India. So there is a comparison. Just understand that in metaphor there is comparison, right? So he says that Kalidas is the Shakespeare of India. Life is not a bed of roses. Life is not a bed of रोजेज, मतलब जीवन एक रोज नहीं है, जीवन एक गुलाब का फूल नहीं है, which means that there is we cannot say that life is easy. Life is not an easy task. We will have to face a lot of challenges. जीवन में हम बहुत सारे चुनौतियों का सामना करते हैं. हमें जीवन में सरल नहीं है, किसी की जिंदगी सरल नहीं है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो. भगवान राम भी पैदा हुए तो उनको भी तमाम कष्टों का सामना करना पड़ा. So happens in the case of Lord Krishna. There is another, integrity is the backbone of character. Another example, integrity is the backbone of integrity is the backbone of character, right? That is another important. एक बहुत बड़ी बात है, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस. रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस. रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस. ठीक है. और मैंने फिर कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लाइफ इज अ टेल told by an idiot. This is what this is a very famous line of Hamlet, of Macbeth. Macbeth said that life is a tale told by an idiot. Life is a tale told by an idiot. जीवन एक टेल है जो कि एक मूर्ख द्वारा कहा गया है. अल्टीमेटली फाइनली ही रियलाइजेस दैट देयर इज नथिंग मीनिंग, देयर इज, लाइफ इज कंप्लीटली मीनिंगलेस. सो दिस इज व्हाट आल्सो ही सेज, that life is a dream. Life is a dream. Life is a life is a life is a dream. Now so these are the examples of metaphor, right? Now, so this is a metaphor is a condensed form of simile. Sometimes we can say that metaphor is the condensed form of simile. That is another name. Metaphor is a condensed form of simile, in which a comparison is made between two things or two objects, right? So that is called metaphor.
And if you see that simile is very simple. Every metaphor can made with simile. So if you take simile, then simile is very simple. The two things are compared by using as, like, and so. Here two things are object, ठीक, are abstract ideas, are compared by using as, like, and so. That is, however, there must be some differences. यदि हम दो चीजों की तुलना करते हैं, दोनों में एक अंतर होना चाहिए. जैसे एक जीवित व्यक्ति का जीवित व्यक्ति से तुलना हम नहीं कर सकते, ठीक है. दैट इज, समझिए, एक जीवित का जैसे नहीं कर सकते कि लायन इज लाइक टाइगर, ऐसा नहीं होता, ऐसा हम नहीं कर सकते. लायन इज लाइक अ टाइगर, ठीक है. हम जब तुलना करते हैं दो, खास तौर से जब दो हम ऐसी चीजों का तुलना करते हैं, तो उसमें हमें एक चीज ध्यान देना चाहिए कि एटलीस्ट दोनों में एक चीज अंतर होना चाहिए, कुछ डिफरेंसेस होने चाहिए, राइट. कुछ डिफरेंसेस होने चाहिए. देयर मस्ट बी सम डिफरेंसेस. जब डिफरेंस नहीं है तो फिर वो फिगर्स ऑफ स्पीच वैलिड नहीं माना जाता है. तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एवरी मेटाफर, each metaphor can be made figures of speech and vice versa, और each figures of speech can be made metaphor. इतना आप क्लियर करिए. अब हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. Personification. In personification, as you know that this is called person. It is called person. Person से personification बना हुआ है. So person means personal. For example, if I say personal means life, livelihood. Someone, if I have someone life, right, life. तो जब हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसका लाइफ नहीं है, उसको हम लाइफ दे देते हैं. जब किसी ऑब्जेक्ट को जिसका लाइफ नहीं है, जब उसको हम लाइफ दे देते हैं, so then it becomes personification. So lifeless objects are treated like one abstract thought. In these figures of speech, lifeless objects are treated like one abstract thought. लाइफलेस, जिसमें कोई लाइफ ही नहीं है, दो लाइफलेस ऑब्जेक्ट को हम एक लाइफ बना देते हैं, है ना. जैसे मैंने कहा पर्सन, क्वालिटी, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा. जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस. अपॉर्चुनिटी knocks the door but once. ये वेरी फेमस इंपॉर्टेंट है कि अपॉर्चुनिटी जो है, मौका आदमी के पास आता है लेकिन एक बार आता है, एक बार हाथ से निकल गया ना, तो फिर उस मौका को पाने में काफी समय लगता है. दैट्स व्हाट ही सेज कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट एट वंस. तो देखिए, अपॉर्चुनिटी जो होता है वह कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि नॉक्स करता है, दरवाजा खटखटाएगा कोई जीवित प्राणी. बट हियर अपॉर्चुनिटी विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया is given the life, is given the quality of a life, quality of a life-like person. If someone who lively person, for example, if someone who is alive,
right? A person who is alive means that person has stamina, caliber, you know, that the power of working. So this is alive. Life means we are alive. For example, like human beings, like any creatures, living creatures who can work. So that is also very important. Lifeless object are treated like one abstract thoughts. Experience is the best teacher, जैसे मैंने कहा. Experience is the बेस्ट टीचर. जो आपका एक्सपीरियंस है ये बहुत ही अच्छा टीचर है. एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, इस तरह के जब आपको एग्जाम्पल मिलेंगे तो इनको सीधे आप सिंपली जस्ट से दैट दे आर कॉल्ड personification, which are lifeless object, which does not have any life. If we say that has no life, right? So this is called lifeless object, right? So that is another point that we find in personification. Its name, as you know, that seems very clear that this has been come by the word called personification, means that an abstract ideas or thinking is personified. That an abstract ideas or thinking is personified. We make him like human beings. Any non-living things is being treated as a living being. That is only definition. If you want to understand this, just only the definition is that personification means any non-living entity is treated as the living entity. Any non-living entity is treated as a living entity. So that is the personification, right? Then we come to the apostrophe. मैंने मेटाफर से स्टार्ट किया. सिमिली बहुत सिंपल है. सिमिली को रिकॉग्नाइज करना इट्स वेरी सिंपल. इफ लाइक, एज एंड सो आर यूज्ड, देन सिमिली. मेटाफर मैंने बताया था कि देयर आर टू थिंग्स, इनफैक्ट टू आइडियाज are compared as one. We take for granted. We don't make discrimination. और इसके बाद जो आता है another is called apostrophe. जैसा मैंने कहा apostrophe का मतलब ही होता है किसी को बुलाना. apostrophe का मतलब होता है किसी को एड्रेस करना. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं उद्बोधन करना. सो दिस इज द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, to the absent, or to a personified object or idea. Direct address, this is a direct address to the dead, the absent, or to a personified object. Direct address to the dead, the absent, or a personified object. This is called apostrophe, right? So that is very important. ठीक है. For example, जैसे कि हम किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी डेड को हम डायरेक्टली एड्रेस करते हैं. जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, ओ लिबर्टी, व्हाई आर यू सो डियर. मैंने कहा ओ लिबर्टी, व्हाई आर यू सो डियर, ओ लिबर्टी. और ए अपॉस्ट्रॉफी का जो चिन्ह है, इसमें अक्सर कामा या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है. जिसको हम बुलाते हैं उसके आगे हम या तो अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं या तो ए लगा देते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, या तो हम कामा. जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, फ्रेल्टी दाई नेम इज ह्यूमन. फ्रेल्टी कामा दाई नेम इज
वुमन। ये बहुत फेमस लाइन है हैमलेट की। ही सेज टू ओफिलिया दैट फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। राइट, ये हो गया। जैसे एक बहुत फेमस है ओ जूलियस सीजर, ओ जूलियस सीजर, फिर पास दाउ आर्ट माइटी एट। ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। ठीक है। एक बहुत फेमस लाइन है ब्रेक 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 ब्रेक। दाउ इस ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो दिस इज अ पोएम बाय अल्फ्रेड टेनिसन। So here also you use this is called another what we call, that is called personification, where something that has no life is given life like quality, not life like quality, sorry, that is a past tense. It means that an address, there are the address to some non-living creatures, there are address to some non-living creatures, right? तो कोई जो नॉन लिविंग क्रिएचर्स है यदि उनको हम एड्रेस करते हैं तो दे आर कॉल्ड परसानी, दे आर कॉल्ड एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब ही होता है उद्बोधन। जब हम किसी चीज को पुकारते हैं, जब हम किसी चीज को बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। सो राइट, सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। देन so that is how you just only understand apostrophe, where you find the direct address to the non-living entity, the direct address to the non-living entity, which is like that we address, we say that जैसे कहता है ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, फ्रेलिटी दाई नेम इज ह्यूमन। जब किसी को हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो ऐसी स्थिति में हम इनको अपोस्ट्रॉफी करते हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें अक्सर कामा लग जाता है, या तो कामा नहीं लगता तो इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाता है। सो दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। इसके बाद एक आता है एंटीथेसिस। Antithesis, it is also very important. You know thesis, what is thesis? We write a thesis when we get enrolled in a PhD degree. We write a dissertation, then we write a thesis. Thesis means argument, a proclamation, a truth, something which is valid. For example, there is a validity. We say that we want to come to the final argument, that is thesis, right? That's what we write thesis. Antithesis means it's opposite, right? It's opposite. So देखिए एक जैसा पढ़ते हैं ना thesis, antithesis and synthesis, this is Hegelian theory, that there is a thesis, then there is that thesis is always open for its anti, therefore antithesis. Then there is a compromise, that is called synthesis. But antithesis is, for example, जैसे एक एग्जाम्पल है चार्ल्स डिकेंस का अ टेल ऑफ टू सिटीज का, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, और फिर था इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम मतलब यह बहुत अच्छा समय था और बहुत खराब समय था। दिस इज फ्रॉम अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज, जिसमें दो शहर की बात हो रही है, एक है पेरिस
एंड अनदर है लंदन। सो जॉर्ज डिकेंस ओपन्स हिज बुक, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम एंड वर्स्ट ऑफ टाइम। तो दो आइडिया एक साथ आ रहे हैं, बेस्ट एंड वर्स्ट, टू कंट्रास्टिंग इमेजेस, और दैट इज कॉल्ड एंटीथीसिस। एक में थीसिस बता रहा है, दूसरे में एंटीथीसिस बता रहा है। ऑक्सीमोरॉन नहीं है, विरोधाभास नहीं है, समझने का प्रयास, इसमें एक लॉजिक है, एक परफेक्ट एक प्रोक्लेमेशन है, जिसका थीसिस पहले समझ जाइएगा। जैसे मैंने कहा टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। मैंने एक एग्जांपल दिया, टू एरर इज ह्यूमन, राइट, एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। टू फॉरगिव इज डिवाइन। स्वाभाविक सी बात है कि यदि हम गलती करना इंसान का काम है और क्षमा करना भगवान का काम है, तो एक यहाँ पे एरर हो गया और एक फॉरगिव हो गया, ठीक, गलती और क्षमा। सो दैट इज एंटीथीसिस। मतलब जब हम एक थीसिस, हमें एक आर्ग्यूमेंट होता है और उसी सेंटेंस में उसका अपोजिट भी आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एंटी। सो दिस इज कॉल्ड एंटीथीसिस, राइट। So this is called thesis and antithesis, which is also very important thing, that thesis and antithesis. Then there is a synthesis, जैसा कि आप लोग PhD करेंगे तो आप थीसिस जानेंगे कि व्हाट इज थीसिस, आप थीसिस लिखेंगे। बट मेरा यही कहना है कि when you read this types of figures of speech, if it is coming, then just only find that this is a antithesis. जैसे मैंने कहा, देखिए एक एग्जांपल है, लव इज एन आइडियल, लव इज एन आइडियल थिंग, एंड मैरिज इज अ रियल थिंग। कहा जो प्यार है वह एक आदर्श है और एक रियल है। तो एक आइडियल है, आइडियलिज्म, जैसे आप जानते हैं दिस इज एक फिलॉसफी, एक आइडियलिज्म फिलॉसफी आया था और उसका एक रियलिज्म आया था, यथार्थ सत्यवाद। जैसे प्लेटो जो था वह विश्वास करता था आइडियलिज्म में, प्लेटो, और अरिस्टोटल जो था वह रियलिज्म में, अरिस्टोटल, या चार्ल्स डार्विन की जितनी भी थियोरी है वो कोई आइडियलिस्ट की बात नहीं करता, या जैसे आपका विक्टोरियन नॉवेल हो गया। तो जहां पे दो आइडियल, लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। प्यार जो है जब हम करते हैं तो एक आइडियल होता है, आदर्श की बात होती है, उसमें कोई यथार्थ कहां होता है। लेकिन जब शादी हो जाती है तो यथार्थ दुनिया में रहना है, देन वी आर बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय सम मोरल लॉ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैरिज। यू सी दैट इज, देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच कितनी अच्छी बात कहता है, प्यार और शादी में अंतर बता रहा है कि love is an ideal, we have romance, we are romantically involved in a love, but for example once we get married then there is an realism, this is a realistic approach। तो फिगर्स ऑफ स्पीच से आप देखेंगे कि how a poet uses certain beautiful objects, like, so today I stop here, I taught you 3 figures of speech, इनको रिवाइज करिएगा। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल मूव फर्दर। थैंक यू। ऐसा करिए भैया, बैठ रहे हैं, बैठाइए मत, हमें मार्कर भी इसको मिटाना, देख रहे हैं कैसे मिटा है, इसको मिटाना कोई प्रोसेस है, इसे सही से देख रहे हैं, डॉट डॉट पड़ा रहता है। ये चीज हमसे पूछेंगे तो बताएंगे। चलिए देखिए, पहले आते ही लोग